मर्जी से गई हैं पुलिस स्टेशन में, बहुत हंगामा करके, कॉलोनी में भी बहुत परेशान करके। तो आप लोगों के साथ रहना संभव नहीं है सर। उन्होंने मुझे खुद घर से बाहर निकाला है, तमाशा करके घर से बाहर निकाला है मुझे सर। आप ये बताइए, आप लोगों को ये फोटो में समय बर्बाद करके क्या मिलेगा? अगर आप लोगों में नहीं बनती है जी, आप लोग साथ नहीं रह सकते तो आपसी सहमत के तलाक लेंगे, तो आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, या आप कहिए तो हम इस मैटर को मीडिएशन के लिए रेफर कर देते हैं, मीडिएटर आपका बहुत अच्छे से मैटर सॉल्व करेगा। अगर आपका रिजल्ट हो जाए ज्यादा अच्छा है, आप लोग कोर्ट कचहरी में समय बर्बाद कर रहे हैं। पिछले चलेंगे अंडर सेक्शन 498 डाइवोर्स मैटर। Please let's say of the Divorce Prohibition Act. 294/406 आप लोगों के बीच में is there any possibility of compromise? नो मैलर, Huh? Yeah? नो। Sir, may I request please remove the stay, let the investigation go. Sir. इसका जवाब दीजिए, compromise हो सकता है। No, sir. No, I want that investigation should be continued. There is no possibility of compromise? नो। आप लोगों के बीच में राजीनामे कोई संभावना है? नो मैलर। No? कभी हुई थी? 8 अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022? 2021। अरे कोरोना समय शादी हुई। अच्छा, कितने दिन साथ रहे? 1.5 महीना। 1.5 महीने। तो अब आप लोगों के साथ रहना संभव नहीं है? सर, उन्होंने मुझे खुद घर से बाहर निकाला है, तमाशा करके घर से बाहर निकाला है मुझे सर। हाँ बोला। नहीं सर, ये रॉन्ग एलिगेशन है सर, हाँ? रॉन्ग एलिगेशन है सर। ये अपनी मर्जी से गई हैं पुलिस स्टेशन में, बहुत हंगामा करके, कॉलोनी में भी बहुत परेशान करके। आप ये बताइए, आप लोगों को ये फोटो में समय बर्बाद करके क्या मिलेगा? अगर आप लोगों में नहीं बनती है, जी आप लोग साथ नहीं रह सकते तो आपसी सहमत के तलाक लेंगे। जी, मैंने डिवोर्स ऑलरेडी फाइल किया है मैडम। नहीं, आपसी सहमत से ले लीजिए भाई, आपसे लड़ाई झगड़े से क्या फायदा है? जरूर। बैठ के बात करिए, कहिए मैं मीडिएशन में मैटर रेफर कर दूं। मीडिएशन के लिए सर कुछ है नहीं बात करने के लिए अभी। क्यों नहीं है कुछ? नहीं है सर अभी, साक्षी है। आप क्या चाहती हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो, ट्रायल चले, फिर मैं समझ में आएगा कौन क्या चाहता है, कौन नहीं चाहता है, किसका इंटेंशन गलत था, सही था। अगर आप उनको बार बार जबलपुर में जाना चाहती है इसके लिए, अगर आपका आपस में बैठने से, कोई बात करने से मैटर सुलझ सकता है कि नहीं, ये बताइए। पूछ लो वकील साहब। आप लोगों को डिवीजन हो सकता है आपस में बैठ के, हो सकता है अच्छी तरह होती है। एक बार ट्राई करिए, आपस में बैठ के ये खत्म करना है सर, हाँ, देखो आपस में रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करिए ना। जब तक आप लोग आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, या आप कहिए तो हम इस मैटर को मीडिएशन के लिए रेफर कर देते हैं, मीडिएटर आपका बहुत अच्छे से मैटर सॉल्व करेगा। अगर आपका रिजल्ट हो जाए ज्यादा अच्छा है, आप लोग कोर्ट कचहरी में समय बर्बाद कर रहे हैं। देख लीजिए एक बार, अगर आपकी में बैठ के she said that she doesn't want to और इन्वेस्टिगेट तो ऑब्वियसली कर सकते सर, पैकेज ऑफ देयर ऑन इमोशंस, ठीक है ना? so they have not go for the mediation. Why not mediation? I have already suggested to go for mediation, but she led in front of me law, saying she doesn't want waste to pursue the mediation. Well, you wanted to contest in court of law, nothing else. The sole purpose is to contest. So what would be the result of mediation? Tell me, what would I do by taking the compromise? No, why not? If it is not possible for both of you to live together. But sir, I have Amicably. really suffered a lot. I have been wronged emotionally by respect. Sir, what am I supposed to answer everyone in the society? So, My intention was never wrong, sir. no, that's all right. I just, I wanted whether you both wanted an amicable settlement or not. Okay, all right. If it is not possible for both of you to remain together, then you can snap your wife for an amicable settlement also. Sir, she is dragging my senior citizen parents to court. Okay, that's all right. That's why I'm telling you to sit together and talk with each other. They have indulged cruel. That may be the proper solution how this matter can be resolved. That's why let me refer this matter to mediation.
मीडिएशन को रेफर कर देते, ठीक है, बात करते, बात करिए, कोशिश करिए। देखिए श्री फॉर पिटिशनर श्री मोहन लर्नड काउंसिल एप्लीकेंट क्या नाम है? अरिजीत रॉय सर। अरिजीत रॉय श्री पंकज तिवारी लर्नड पैनल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1 स्टेट श्री प्रताप सिंह लर्नड काउंसिल रिस्पोंडेंट नंबर 2, ठीक है, that is present in the court. This matter is a matrimonial dispute, and this matter relates to matrimonial dispute. Matrimonial dispute. FIR against the petitioner husband and in-laws having taken into consideration the controversy involved between the parties and the fact that it is that this matter relates to matrimonial dispute with the consent of parties. This matter is it will be matter to refer this matter for mediation. लिखिए respect the Secretary Legal Service Committee, High Court is directed to appoint some skilled mediator. Is directed to assign this matter with some skilled mediator. So the controversy between the parties may be resolved. Okay. Parties are directed to remain present before the mediator. कब की डेट लगाना आपने? ये सर 19 फरवरी बोलना है। नहीं उतना लंबा डेट नहीं, जनवरी का 10th week of January लगा दें, second week कर दें, before the 25th January मतलब as mediator 25th January. 3 January madam. Why not in the second week of January? 11. My client insists that she says that 22nd week of January हो सकता है. First week of January में is not available. No, second week of January. Directed to remain present on 11/1. Lot. 2024 before the mediator. Full stop. लिखिए mediator. 12 January, is it possible, sir? 12 कर लो। 12 कर लो। Mediator shall make full effort to resolve the matter, and if it is not possible for him, and if matter is not resolved between the parties, then it is directed to furnish the report.